Assalamualaikum everyone, this is Ayesha from CxO Global Forum, a knowledge sharing platform for all the C levels across Pakistan and around the globe. Every time we're having some very interesting guests with us today as well. We have Mr. Hamza Nizam Qazi with us, who is a senior legal counsel at Lucky Core Industries. Assalamualaikum sir, how are you? Why Islam? I'm all good. How are you? I'm good too. Okay, so it is 6:30 p.m. in Pakistan now, sir. How was your day so far? Quite hectic. I've recently joined Lucky Co, so the work is now started building up, and I've been just busy the entire day, handling legal issues and the business related issues. So it's quite interesting as well with new things that I've come across every day. Okay, right. So, sir, before we start off with any other discussion, I would want you to please let our audience know who basically Mr. Hamza Nizam Qazi is. Hamza Nizam Qazi is a professional corporate lawyer who works around with companies, businesses, and various startups and advises companies on the legal risks and issues that a business faces and how to overcome and execute those things that are required for a business to move forward. Right. Okay. Thank you for this introduction, sir. Okay, so I would want to start off with a question, sir, which is what inspired you to pursue a career in law and how did your journey lead to become a senior legal counsel? Well, I started my legal background in 2012. It was basically I completed my legal background. Basically, it's all started with the 2007 lawyers movement. I was very much intrigued. I was a youngster at that time, so I was looking into those things. There were some seniors of mine, friends, and some connections who inspired me a lot on discussing these legal issues and discussion on the lawyers movement on a day-to-day basis. So that really inspired me on pursuing a legal career. Okay, right. So, sir, I would want to ask what challenges did you face in your early legal career? Because, challenges, they're a part everywhere. So, what were the ones that you faced yourself in your legal career? Well, there were many challenges that I faced. A few of them, I'll say. There was once you complete a degree, it's very important that you stay in touch with that degree and guide the youngsters that come up. I had some good seniors who helped me in this perspective, but most of them, they were a little bit reluctant, or they were very much busy in their own field of work, that they were not able to give that much time to a youngster that came up, that was coming up in this field, and they always had, okay, go do yourself. But when asking about them of various things, so I had to go into myself, and being the first generation lawyer in my family, so I had to go myself in the field, do my the things myself. खुद ही जाके सारे काम करने थे, खुद ही जाके कोर्ट में लिटिगेशन देखनी थी, सारी चीजें, everything was done by myself. Of course, there were some seniors who really guided me, but एक होता है ना कि there's some support you can look up into, Well, कि definitely यार right. इनके पास चले जाएं, किसी के पास जाके थोड़ा कोई guidance लें. That were very few. So that is one of the challenges that was really of being a first generation lawyer, कि यार किसको देखें हम, के किससे help लें basically. So that was सही one. है. Secondly, the legal system, the legal education system has become very much on track. They've got good courses, they've got good colleges, universities that have come up. At my time in 2008-9, there were very few universities who were giving law degree programs. Very few colleges were there, and you had to just choose between one and two out of that, and then you had to choose where, from which college that you can have a good name and then come up. Luckily, I chose Government Islamic Law College, and I obtained a second position all over Karachi as well. So that was on basis of my teachers who guided me through the exams and everything. So that was an achievement for me at that time. Definitely right. Okay. So, sir, जैसे आपने बात किया कि there were a very few people who you could look up to. तो आपके कोई mentors थे, people who influenced you, जिनकी वजह से you came into this field or it was your own passion?
एक तो खुद भी पैशन था रीडिंग का, अब लॉ पढ़ने का, रीडिंग बुक्स एंड एवरीथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ डिफरेंट, एक तो लॉ की बुक्स पढ़ना भी और डिफरेंट एस्पेक्ट नॉवेल्स पढ़ना या डिफरेंट फिक्शंस एंड फैक्ट्स की बुक्स पढ़ना, दैट वाज पैशन ऑफ मी कि बस कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है. And then I would name Mr. Advocate Masood Ghani Saab, who helped me, who is not in this world anymore, but he helped me a lot during this my legal career. और ही गाइडेड मी इन ऑल द एस्पेक्ट से कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, किस तरह पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर यू हैव टू कम अप. तो he Right. was a great mentor from the education and legal perspective. Okay, right. Okay. So, sir, I would want to know about the skill set here. कि आपको क्या लगता है कि कौन से skills हैं ऐसे those are necessary to be in a position where you are today? Basically, I'm a corporate lawyer. See, I work as an in-house counsel. I've done very few litigation back in 2012, 11, 12, 13. But then I moved my career into corporate counsel. It's basically in-house counsel, advising companies and businesses regarding their own businesses, their own regulatory authorities and everything. So there are दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो जाते हैं. एक लिटिगेटर होता है जो कोर्ट जाता है, कोर्ट के सारे एस्पेक्ट्स को हैंडल करता है, और दूसरा जो है वो इन हाउस बैठ के बिजनेसेस को एडवाइस करता है. आई एम दैट काइंड ऑफ लॉयर. It is very important कि one should be aware of the things जो हमारे पास हैं. Basically, you can say working with the business, having business knowledge of is very important on the legal, especially from a legal person working in a house counsel. Because जब तक Right. business की understanding नहीं होगी, we can always say okay, the last resort is the court, we can go to court and everything, but business is, there's always a cost to something. So my role here, wherever I've been, it's always to minimize the cost, minimize the risk which the businesses face, and then move forward and take the businesses forward. सही, राइट. ओके. सो सर, आपके करियर के अंदर देयर माइट हैव बीन मेनी अचीवमेंट्स, मेनी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, आई वुड से. सो कोई ऐसी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जो आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें? From education perspective, I had obtained second position all over Karachi. That was the biggest achievement so far from education perspective, because overall the city my exam became the second position. That was it. Then when from moving into in-house counsel, there were many challenges which were very significant, like regulatory authority से deal करना. Everything has a aspect. मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं जाऊं किसी डिपार्टमेंट में और उनको बोलूं ये मेरा काम है, आप कर दें. Of course, they have their counter questions as well, counter arguments as well. So dealing with those, especially from the regulatory end, government departments, government agencies, that was a real challenge, which mashallah say I've come up so many times with the agencies and departments. Up now it's very easy for me to deal with them, handle the questions and whatever that comes to me. So that is a very significant aspect, which probably if I hadn't been in the regulatory side for dealing as a legal counsel from the business end with the government, तो वो फिर मुश्किल हो जाता. सही, राइट. तो सर, मेरे यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन है कि जो लीगल साइड है, इज इट चेंजिंग रैपिडली या इसमें ग्रेजुअली चेंज आता है? देखिए, कोविड के बाद से तो बहुत ही रैपिडली चेंज आ रहा है. कोविड से पहले इट वाज मूविंग अ लिटिल बिट स्लोली ऑन अ स्मॉल बेसिस, ग्रेजुअल चेंज आ रहा था ऐसा ऐसा. बट सडनली कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम हुआ. हाउ टू हैंडल लीगल एस्पेक्ट्स फ्रॉम डिजिटाइजेशन टू किस तरह लैपटॉप्स के ऊपर सारा डेटा रखना और सारी चीजें, पहले फाइल्स होती थी उसको आप रिव्यू कर लेते थे. बट कोविड ने फिर हमें ये चीज सिखा दी कि लैपटॉप के अंदर वर्क फ्रॉम होम किस तरह करते हैं, किस तरह आप सारा डेटा एक जगह डिजिटाइज करके मेंटेन करते हैं. एंड देन अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी जो आ गया है, जो कि बहुत सारों को, लेमैन को भी जो है उनको भी हेल्प करता है. बट ऑफ कोर्स दैट इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव थिंग. जब तक एक लीगल लॉयर जो है वो उसको प्रॉपर्ली वेट ना कर दे, उसको रिव्यू ना करे, तो उसको आप पूरा 100% मान भी नहीं सकते. तो दैट इज नाउ चेंजिंग अप. बहुत सारे अभी लीगल बॉट्स भी आ रहे हैं, लीगल एआई बॉट्स भी आ रहे हैं, जो कि आपको रेफरेंसेस देंगे सारे डिफरेंट लॉज के, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंसेस, पाकिस्तान लॉ साइट एंड एवरीथिंग. बट ऑफ कोर्स देयर शुड बी अ पर्सन who can review those. You cannot completely
उनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही, राइट। तो सर जिस तरह ये ग्रेजुअली चेंज हो रहा है एआई के बाद, तो इसके बीच में हाउ डू यू स्टे अहेड ऑफ द टाइम एंड यू आई वुड से स्टे अहेड ऑफ द ट्रेंड जो मार्केट में चल रहा है, जो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा होगा, उसके साथ आप अपनी पेस किस तरीके से यू कीप अप विद द पेस? देखिए, वन शुड रीड एंड वन शुड बी अपडेटेड। देखिए, माय डेली रूटीन स्टार्ट्स बेसिकली व्हेन आई ओपन द लैपटॉप, माय फर्स्ट थिंग इज टू रीड वॉशिंगटन पोस्ट, हार्वर्ड बिजनेस का जो भी उस दिन का आर्टिकल है, उस वीक के आर्टिकल्स हैं, वो एक दफ़ा वो गो थ्रू करना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट है उसको गो थ्रू करना, टू बी अपडेटेड कि इंटरनेशनली एंड ग्लोबली क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह अपडेट्स आ रही हैं, एंड देन कमिंग बैक टू पाकिस्तान के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, एंड कीप योर सेल्फ अप्राइज्ड और अपडेटेड कि ये चीज़ें आ रही हैं। if I am there and I'm just doing legal work and everything, and वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं और मुझे नहीं पता चल रहा, तो that becomes very difficult। तो अभी जिस तरह लीगल AI बॉट्स आ रहे हैं, लीगल चैट जीपीटी सॉर्ट ऑफ लीगल का भी आ गया है, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं। कुछ ऑनलाइन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के वेबसाइट्स आ गई हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, एप्स आ रही हैं। तो वन शुड बी अपडेटेड ऑन दिस रेगुलरली रादर देन जो है, और बातचीत से, लोगों से, डिस्कशन से ही ये चीज़ें आप शेयर भी करते हैं और आपको पता भी चलती रहती हैं। बिल्कुल सही, ओके। सो सर आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो फ्यूचर में अपना करियर लीगल कंसल्टेंसी में बनाना चाह रहे हो, लीगल काउंसिल? What I have come across in my 15, 16 years of experience is always, it's always like we have got various strategies to make things happen, but it's always the execution that counts. Strategies बहुत बनती हैं, you can make 100 strategies of one thing, but it always comes down to that execution of that one strategy. If the legal department of the legal head or anyone working in the legal department, especially the youngsters coming up, of course you can read the law and everything and give various strategies के इस law में ये कहता है, ये law ये कहता है, इसमें ये आप कर सकते हैं, but वो executable कितनी है, execution कितनी होगी उसकी, that is very important। तो अब आगे फ्यूचर जो है न्यू स्टूडेंट्स के लिए या न्यू लोग जो इस फील्ड में आ रहे हैं, वन शुड बी अवेयर कि ऑफ कोर्स लीगल ओपिनियन आप दें, सारी चीजें दें, बट व्हाट इज एग्जीक्यूटेबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स वेयर द कस्टमर, जो कि हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं या इवन इन लिटिगेशन एज वेल, जो आपका कस्टमर है, वो सेटिस्फाई उसी वक्त होगा जब हम एक एग्जीक्यूटेबल वर्जन उसको देंगे कि ये वाली चीज आप करेंगे तो। Definitely right. Okay. So, sir, how do you manage between your personal life and your professional life? It's trying to balance basically. It's work comes, of course family comes first, but work का load जो है वो ज़्यादा होता है, तो I have to maintain that balance। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से घर वालों को भी थोड़ा क्वेश्चंस हो जाते हैं कि आप घर पे कब टाइम देंगे, सारी चीजें, बट वर्क होगा विच इज अ पैशन। इट्स नॉट लाइक कि कोई जबरदस्ती करा रहा है। आई लाइक टू वर्क, आई लाइक टू कम अप के कोई चीज इस तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट्स आए उसको प्रॉपर्ली रिव्यू कर लें, प्रॉपर्ली आप उसको मैंने वेट करके उसको आगे फॉरवर्ड करें, वो एंड इट्स लाइक कि कर जितना अच्छे तरीके से जो जल्दी कर लें वो ज्यादा बेहतर है, बनस्बत यू कीप ऑन लिंगरिंग। तो उसमें कहीं वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। लाइक आई हैव गॉट सम कॉन्ट्रैक्ट्स राइट नाउ जो कि रिव्यू करने हैं एंड आई हैव टू गिव tomorrow, although it can be extended, but ये है कि now काम आया है तो करना चाहिए। Right. Okay. So, sir, lastly, how would you describe your experience with CxO Global Forum? It's been now 1.5, about nearly 2 years that I have joined CxO Global Forum. The networking, the people I meet are exceptionally great. The professionals I meet, the networking dinner, the networking lunches, the expo that took place, that was great. जितने मेरे अच्छे लोगों से बातचीत हुई है, networking हुई है, that was a great, this is a great forum basically, and I'm always there। जब भी CxO forum का कोई भी event especially कराची में होता है, तो CxO एंड कंवल साहब के साथ हम होते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं इस चीज के लिए। Okay, thank you for the feedback, sir. Done with this short interaction here, sir. Thank you so much for your time. I hope that our viewers would be able to learn from you as much as possible. And once again, thank you for pulling out time for this discussion. Thank you. Thank you. Take care.